Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, I hope you are fine. Are you ready to learn something new? Because today we are going to learn some new sounds. Yes, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ CH. यस बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम इसका साउंड सीखेंगे. ओके, हु कैन टेल मी द साउंड ऑफ लेटर C? इट्स ख. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर H? इट्स ह. ओके, ख एंड ह. ये है लेटर C और H के साउंड. बट जब लेटर C और लेटर H आपस में मिलते हैं, एक साथ यूज होते हैं, तब ये न्यू साउंड प्रोड्यूस करते हैं विच इज च. ओके, इट्स च. सो देखते हैं हम ये साउंड कहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो लुक एट योर पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेयर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेयर. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे हम CH को च बोल रहे हैं. चेयर, चेयर. इसी तरह नेक्स्ट है चिकन. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ चिकन. एंड चिकन के अंदर यू कैन सी हियर द साउंड ऑफ CH एज च, चिकन. सो व्हाट इज नेक्स्ट? इट्स चॉकलेट, chocolate. Okay, next one is cherry, cherry. And the other one is chili, chili. Students, you can see that we have started the words with the ch sound, but हम इस च sound को word के last में भी use कर सकते हैं. जैसे कि you can see on your page, watch. Last, in the last, the sound ch. Watch. Peach. Torch. Okay, so here we are using CH at the end of the word. So lunch, couch. Okay students, so इस तरह से we can use the sound of CH, okay, at the start of the words and at the end of the words also. So students, now you know that the sound of CH is ch. Okay, it's ch. So you have to remember the sound. Keep learning. Take good care of yourself. We will come back with another video. Allah Hafiz.